Hello guys, welcome back to our channel Apna Tutors. So I think today my visibility is good, right? From few days I was trying some different places to get good visibility in my face, but I was not getting good light. But maybe finally it's resolved. Okay, so leave this. What we were doing, we had completed till question 17 of exercise 3.2. Yeah, so till now we were doing like basic properties of the matrices, but this video is quite important from the exam perspective. In this video I am going to do some question which are applicative till what we had what completed. Yeah, and from exam perspective also this video is quite important. I will tell in this while doing question I will tell you some one or two important question for the exam which we are going to do today. Yeah, so you should be very attentive today. Yeah, so let's start. Yeah, so what is question 18th? We are given one matrices A and I is the identity matrix of order 2. We know it now, right? What is I? I is identity matrix of order 2, that is 1 0 0 1. Okay, so what they are saying, you saw that I plus A equals to I minus A into this matrix. Okay, by the way, you should know, right, why name of this matrix is identity matrix. You should recall. If you don't know, you should visit introduction video. Okay, so this question is very important from the exam perspective. Why I am saying like you will get it while doing this question? Because this question involves matrix property also, this question involves trigonometry property also. So this question is quite कह सकते हैं मीन्स काफ़ी पूछा जा सके ऐसा क्वेश्चन है. सॉरी मैं भूल गया, वापस फिर से मैं इंग्लिश में ही शुरू हो गया. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दिया है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या फाइंड करना होगा, आई प्लस ए. आई प्लस ए कैसा दिखेगा, पहले मैं एल एच एस फाइंड कर रहा हूँ. ओके, अपने को बताना होगा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. और एल एच एस क्या है, आई प्लस ए, और आई मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, एंड ए मैट्रिक्स क्या होगा अपना 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0. तो अगर इसको अपने ऐड करें तो क्या होगा, 1 प्लस 0 0, 0 minus 10 alpha by 2, that is minus 10 alpha by 2. Now I am not saying right how to add two matrices. You should add it by corresponding elements. 0 plus 10 alpha by 2 will be 10 alpha by 2, and 1 plus 0 will be 1. So these are LHS. Now we should find RHS, and we should show that RHS is same as this matrix, that is I minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 and 1. Okay, let's do it in next page only. But we have to find I minus A cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha, cos alpha minus sin alpha, sin alpha and cos alpha. Okay, and what is A? 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 and 0. Okay, so I will be 1 0 0 1 minus 0 10 alpha by 2 minus alpha by 2 minus 10 alpha by 2 and 0 into this matrix cos alpha minus sin alpha, sin alpha and cos alpha. Okay, let me check, is it correct, right? Minus 10 alpha by 2 and 10 alpha. Okay, minus sign is here. It's good I had watched this. Okay, let's do this quickly because little bit calculation will be involved in this question. Okay, so what will be this matrix minus this matrix? Again we will subtract it by corresponding elements. 1 minus 0 will be 1, 0 minus 10 alpha by 2 will be minus 10 alpha by 2,
0 minus tan alpha by 2. Okay, minus minus plus. This was minus tan alpha by 2, right? And 0 minus tan alpha by 2 minus tan alpha by 2, and 1 minus 0, 1. This is cos alpha minus sin alpha, cos alpha. So what will be this matrix? What will be this matrix? Let's quickly multiply it. How we multiply? First row with the first. Now I am not wasting time to again and again tell you what is matrix multiplication and addition. You should multiply this row with first row with first column. You will get first element. So it will be cos alpha plus sin alpha into tan alpha by 2 minus cos alpha tan alpha by 2 plus sin alpha, then minus sin alpha plus cos alpha tan alpha by 2 minus minus plus sin alpha tan alpha by 2 plus cos alpha. Okay, so this is our matrix, right? Now we should use the trigonometric formula in such a way that we get our LHS. First of all, you should not, I will give you one tip, that whenever you see tan alpha, you should try to convert it into sin alpha and cos alpha. You should use some formula, or you should be able to see somewhere that how we will be able to convert it into sin alpha or cos alpha. Another thing, if you are saying something in alpha by 2 form, you should convert everything in alpha by 2 form. Okay, you should remember this as tip. First, convert tan alpha always into sin alpha and cos alpha form. Means you should get rid of the tan alpha. यानी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कैसे भी tan alpha से निकल पाए, बिकॉज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा में काम करना इजी है. इफ यू आर सेइंग कहीं भी आपको अल्फा 2 दिख रहा है, तो कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू अल्फा बाय 2 फॉर्म. इसका मतलब क्या है कि कोई भी अल्फा के फॉर्म में कुछ है तो उसको भी अल्फा बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. चलिए, तो उसको ट्राई करते हैं अपने. तो इधर क्या ट्राई करेंगे, अपने कॉस अल्फा को कॉस मीन्स अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे. और अपने को पता है फॉर्मूला दैट कॉस 2 अल्फा इज सेम एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा. ये मैं क्यों ये फॉर्मूला ले रहा हूँ, सॉरी मैं क्यों ये फॉर्मूला ले रहा हूँ कॉस 2 अल्फा का, वो आपको रीजन पता चलेगा. लाइक you should be able to see what will be cancelled out in the further steps, right? So let me do it in next page. Okay, so I had paused the video to save the time. Okay, so we had this matrix, right? So what I was telling, in place of cos alpha you should place 1 minus 2 sin square alpha. चलिए, तो अगर उसको हम रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बिकॉज इधर अपना 2 अल्फा है, तो अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा बाय 2. लाइक आई वाज सेइंग कि यू शुड कन्वर्ट एवरीथिंग इन अल्फा बाय 2 फॉर्म. ओके, सो साइन अल्फा को भी कन्वर्ट करना होगा साइन अल्फा बाय 2 के फॉर्म में. तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2. तो अगर मैं उसको लिखूँ 2 साइन अल्फा बाय 2 टू कॉस अल्फा बाय 2. अब जैसा मैंने आपको बोला था कि 10 को आपको ट्राई करना चाहिए कि साइन और कॉस में ही लिखे. तो अगर आप साइन और कॉस में लिख ले तो क्या होगा, 10 को साइन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन
cos अल्फा बाई 2, राइट। तो cos से cos कैंसिल कीजिए। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने cos 2 अल्फा का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि मैं अगर टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 लिखूंगा और साइन अल्फा को मैं अल्फा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपको दिखना चाहिए, राइट, बिकॉज देन ओनली you will be able to get one here, right। हम LHS में इधर क्या था, अगर मैं आपको LHS बताऊं तो इधर क्या था, LHS में 1 था, राइट। सो अपने को इधर 1 चाहिए था। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला पुट किया ताकि ताकि इधर से कैंसिल आउट हो पाएगा, राइट। ओके, तो अगेन इधर भी सेम टेक्निक अपने अप्लाई करने की ट्राई करेंगे कि अल्फा को ट्राई करें कि अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लेके आए, टेन अल्फा बाई 2 को ट्राई करेंगे कि साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए। तो अगर इधर मैं डालूंगा साइन अल्फा बाई 2 के फॉर्म की जगह साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब आप सोचिए मुझे कॉस अल्फा की जगह क्या लिखना चाहिए कि कैंसल आउट होके मुझे कुछ ये कैंसल आउट हो रहा होगा उसके साथ, लाइक अगर मैं अब इधर साइन लिखूंगा, साइन अल्फा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखूंगा, तो नीचे का कॉस और ऊपर का कॉस कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, तो ये मुझे हेल्प नहीं करेगा कि मुझे ये फॉर्म में मिल जाए, राइट। मैं बताऊंगा आपको मैं किस फॉर्म में कहने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अब मैं ट्राई करूंगा यूज करने का फॉर्मूला, cos 2 अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अगेन टेन अल्फा बाई 2 की जगह में क्या लिख लूंगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। और आपको ये भी देखते रहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, रिजल्ट में क्या चाहिए, राइट। ओके, सो ओके, अब इधर आप देख सकते हैं कि मैं अगर इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इधर भी वही है, राइट। ओके, इधर 2 आएगा, साइन अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को मिल जाएगा इधर माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, यानी वो तो क्या है माइनस टेन अल्फा बाई 2, बिकॉज अपने को चाहिए था माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग फास्ट, आई एम ट्राइंग टू explain it in very detail so that you will be able, because this may get changed, maybe some other formula can be used, they can make you some other question in which some other other trigo formula could be used, but you should be aware that in what sense you should think, what should be the intuition behind the writing something। okay, so again अब इधर क्या है साइन अल्फा, तो इधर मैं अगर साइन अल्फा की जगह फॉर्मूला डालूंगा तो क्या होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अगेन दिस इज ऑफ दिस टाइप, सो यू शुड राइट कॉस अल्फा फॉर्मूला इज दिस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 2 cos square alpha by 2 minus 1 minus, and in place of 10 alpha by 2 you should write sin alpha by 2 by cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2. Okay, now again this is of this type, right? So again you should write it here. In place of sin alpha you should write first of all 2 cos alpha by 2 into sin alpha by 2. In place of 10 alpha by 2 you should write sin alpha by 2 by cos alpha by 2. Plus in place of cos alpha
what should you write? Because this would be cancelled out. So you will be remaining with 2 sine square alpha by 2. So you want something related to sine square alpha by 2, and that is the best form of cos 2 alpha is 1 minus 2 sine square alpha by 2, राइट. आई थिंक इतना तो पता चल गया होगा. तो बस हो गया अपना काम. इधर से कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, इधर से कैंसिल आउट होके ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, बिकॉज इधर cos अल्फा बाई 2, इधर से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 विल बी कैंसल आउट with the 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, and we will be remaining with minus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, that is tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2, because minus is there. And here what we will be remaining with, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो cos alpha by 2 will be cancelled cos alpha by 2, and we will be having minus 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 plus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, that would cancel out, and we would be remaining with minus minus plus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, that is tan alpha by 2, and here we will be remaining with 1, right, as 2 sin square alpha by 2 will be cancelled out with the with the minus 2 sin square alpha by 2, we will be remaining with 1, so which is equals to LHS. So we got RHS equals to LHS, hence we are done. Yeah, so this question is very very important for your exam perspective. I am not saying particularly this question will be asked, but they can ask something like this. So you should be aware of every trig formula also, and you should be good in your calculation and your intuition idea, like in what sense you should use the formula to get your result. I think I had tried my best to give you intuition. Maybe this video can get little bit long, but let it be. If you are getting something, then it's good. Yeah, this question I will try to do it little bit quickly. Okay, so what is given? A trust fund as rupees 30,000 that must be invested in two different type of bond. The first bond pay 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual interest of first is 1800 and second is 2000. Okay, so in this type of word problem, what we do generally, we assume some variable, right? Then we try to proceed. Okay, so let me assume I am doing first part. Okay, second part it's similar, so you do it as homework. So what I will do, let X be fund invested in bond 1. Okay, so how much fund will be invested in bond 2? Then 30,000 minus X will be invested in bond 2, right? So you want an annual interest of 1800, and in first bond you are getting 5% interest, and in second bond you are getting 30,000 minus X interest. Now you should form some matrix multiplication by which you should be able to find the amount you should invest in both the bond to get 1800 interest. So first I will give you intuitive idea in what way you should take the matrix. Okay, so what you want, that for you have invested X amount in bond 1 and 30,000 minus X in bond 2, right? So, and in bond 1 how much interest you are getting? 5%. So let it be X into 5 upon 100. This is how we find interest, right? X into means 5% of X plus 7% of 30,000 minus X
you should get it to be 1800 because we want interest to be 1800. You will be getting 5% interest from first bond and 7% interest from the second bond, and you want that final interest you should get it as 1800, right? So can you write something in matrix from of this? So I will tell you how should you write. There is one more question of this type. In that you should try to pause the video and try it. But here I will tell you how to do it. So if you take x here and 30,000 minus x, multiply this matrix with 5 upon 100, column matrix 5 upon 100 and second element as 7 upon 100. If you multiply this, you will get this, right? So you should take matrix in this form, then you will be able to find the interest. So take matrix as x, 30,000 minus x, this as row matrix, another matrix as column matrix, which is interest matrix. Okay, this matrix is interest matrix and this matrix is fund matrix. तो ये हमें कितना चाहिए, ये हमें चाहिए, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स होगा, ये हमें चाहिए 1800. तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो अपने को क्या मिलेगा, रो 1 इंटू कॉलम 1, 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x upon 100 into 7 upon 100 equals to मैट्रिक्स 1800. तो अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर उनके अंदर की क्वांटिटी इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इक्वल होती है, सॉरी. तो दैट विल बी 5x upon 100 प्लस 3000 सॉरी माइनस x into 7 upon 100 should be equals to 1800. ये आपको चाहिए, राइट? सो अब तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. So solve this, you will get your x. Solve and find x. Okay, so this is the way you should form the matrix multiplication, right? तो इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा. So you got it, right? How should you think? You should first write it in your normal way in which you know. Then from that you should try to convert it into matrix. There is one more question of this type. Question 20. A bookshop of particular school has 10 dozen chemistry book. That means 10 into 12, because one doesn't have 12 books. 8 dozen physics books, that is 8 into 12. 10 dozen economics book, that is 10 into 12. The selling price are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. You should again write it first in the form you should know. So we want that how much total amount bookshop will be getting by selling all the book. So there are 10 into 12 books of chemistry and price is 80. So 10 into 12, if he will be selling all the books, he would be getting total 10 into 12 into 80 rupees. Similarly in other, 8 into 12 into 60 rupees plus 10 into 12 into 40 rupees will be his total. So let it be T. So T will be, if I take out 12 common from every term, and then it will be 10 into 80 plus, this is intuitive idea, okay, this is not the matrix form. I am just giving you intuitive idea from which you should form the matrix. 10, okay, 10 is done, right? 8 into 60
plus 10 into 40. And you should again form matrix from this terms. So what will be matrix? First matrix should be of books, that is 10, 8, 10, and other column matrix should be of price of the books, 80, 60 and 40. So you should write directly in this way. Okay, this way should be first step here. In this way you should calculate the total amount. So we are done with 20th question. Let's do next question, 21st. Yeah, so these questions are also very important for exam perspective. They can ask in short question this way that what is in question, I will tell you. Okay, so assume x, y, z, w and p are the matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. Choose the correct answer in the exercise 21 and 22. The restriction on the n, k and p so that py plus wy will be defined. Okay, so what operations are involved here? First of all, matrix multiplication is involved, then plus is involved. Now for multiplication of two matrices A and B, suppose A is of order m cross n and B is of order p cross q. What you should have to AB to be defined, what you should have, n should be equals to p, that is number of columns of A should be equals to number of rows of p, then only AB will be defined, right? This we had covered it in introduction part. तो अब इधर क्या दिया है, अपने को पूछा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए पी वाई डिफाइंड होना चाहिए. अब पी का ऑर्डर क्या है, पी वाई डिफाइंड होना चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए, पी का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. हाँ, तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, लिटिल पी क्रॉस के, एंड वाई का ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड 3 क्रॉस के. तो इधर से क्या मिलना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ पी, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई, यानी कि k शुड बी इक्वल्स टू 3, यानी k को 3 होना पड़ेगा, राइट. ये हो गया पी वाई के लिए, ये होना चाहिए. अब क्या चाहिए अपने को, डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए. डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, अगर w के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम एज w और y के नंबर ऑफ रोज है, और w के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, x y z w, x n क्रॉस 3, और y का क्या है, y का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस k. या सो इधर से तो 3 इक्वल्स टू 3 है, राइट. सो डब्ल्यू वाई वेल डिफाइंड है. Let me see whether I am taking correct or not. 3 cross k is y, and 1, 2, 3 and 4, n cross 3 is w. Yeah, so wy is well defined. And for py plus wy, उसके लिए क्या चाहिए कि py का ऑर्डर शुड बी सेम एज wy का ऑर्डर, बिकॉज एडिशन में अपने को क्या चाहिए कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम होंगे तो ही वो ऐड हो सकते हैं. तो py का ऑर्डर क्या होगा, py का ऑर्डर क्या होगा, बिकॉज p का ऑर्डर p क्रॉस k है और y का ऑर्डर 3 क्रॉस k है, तो py का ऑर्डर क्या होगा p क्रॉस k, और wy का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस k. अब अपने को चाहिए कि py प्लस wy वेल डिफाइंड हो, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी उधर से अपने को क्या मिलेगा, p शुड बी इक्वल्स टू n, तो ही दोनों का ऑर्डर सेम होगा, राइट. लेट मी रिपीट व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई वेल डिफाइंड चाहिए. तो उधर दो ऑपरेशन इन्वॉल्व है, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है एंड देन एडिशन इज इन्वॉल्व. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब कैरी आउट कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ
columns of the first matrix is equals to the number of row of the second matrix, then only you can carry out the matrix multiplication. और एडिशन कब कैरी आउट कर सकते हैं बिटवीन टू मैट्रिक्स, इफ देयर ऑर्डर इज सेम. सो वही अपने चेक किया, पी वाई लिया पहले, वो कब वेल डिफाइंड होगा. सो उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई. सो के इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली अपने को डब्ल्यू वाई में से तो कुछ नहीं मिला, फिर अपने देखा कि पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, तो पी वाई का ऑर्डर मिला अपने को पी क्रॉस के. कैसे फाइंड करते हैं कि पी का ऑर्डर पी क्रॉस के है, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के है. सो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी और नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई उसको हटा दो. फिर जो बचेगा वो ऑर्डर होगा पी वाई का. सो वो बचा पी क्रॉस के. सिमिलरली डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आएगा एन क्रॉस के. अब उन दोनों के बीच एडिशन करना है, तो वो कब पॉसिबल होगा, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी पी शुड बी इक्वल्स टू एन, यानी कि ये ऑप्शन सही है कि k इज इक्वल्स टू 3 एंड p इज इक्वल्स टू n, राइट. सो लेट्स डू next question, last question of this exercise. If n equals to p, then the order of matrix 7x minus 5z. अब x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, एंड z का ऑर्डर क्या है, xyz 2 क्रॉस p. और अपने को बोला है n इज इक्वल्स टू p, राइट. n इज इक्वल्स टू p है तो दोनों का एडिशन कर सकते हैं बिकॉज सेम ऑर्डर हो जाएगा, राइट. और अपने को पता है कि दो एडिशन करने से कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होता है, तो ऑर्डर क्या होगा 7x माइनस 5z. ऑल्सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से भी कुछ ऑर्डर में चेंज नहीं होता, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन में अपने क्या करते हैं, बस वो स्केलर को उठा के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होता, राइट. तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, सेम एज या तो 2 क्रॉस n लिखो या तो 2 क्रॉस p लिखो. सो इधर अपने को 2 क्रॉस n दिया है, तो ऑप्शन बी इज राइट, 2 क्रॉस n. ओके, सो इधर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है. दैट्स इट. आई नो काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इसमें अभी तक जो अपने कर रहे थे उसका लिटिल बिट एप्लीकेटिव पार्ट था, राइट. सो more explanation was needed, so I think you got it. If you didn't got, I think you should play it again first, then you should come for me to reach out to me. I will be there to help you out. Hope so you like the video. Please show some support to our channel. Thank you so much, and please keep working hard. And from the next video we will be starting next exercise. In this exercise, this video is the most important because from this lots of questions can be asked. I am not saying particularly these questions will be asked, but इसको तोड़ मड़ोड़ के काफ़ी questions बन सकते हैं, because ट्रिगो का यूज़ कर सकते हैं वो.